नमस्कार आपण समस्त को यह वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आप सहित +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSE 1 बा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1 रो यूनिट 3 जहाँकि राइट्स इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया रो चैप्टर रो समस्त इंपोर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर रो नोट्स आपन सह शेयर करबी आ वीडियो आगको कहबी जे आपन पीडीएफ टी किपर पाई पारबे। आ पूर्व यूनिट 1 2 ऑलरेडी वीडियो बन सारी जो देखी ना से देखिपारे। तो चलो स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट हूँ व्हाट इज बिल ऑफ राइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकार बिल ऑफ राइट्स कौन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर इनसीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द बिल ऑफ राइट्स। इट इज द कोरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। It enshrines the rights of all people in the country and affirms the democratic values of human dignity, equal and freedom. The South African Constitution is in its chapter 11 from section 7 to 39 contains South African Bill of Rights. तो South African Bill of Rights कौन निहाती भाव South Africa रिलेटेड हो। तो द फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार साउथ अफ्रीका आर इनसीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिल ऑफ राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन रे बिल ऑफ राइट्स अंडर रे ये सब जो मौलिक अधिकार गुड रही इनसीन होती। ओके इट इज द कोरस्टोन माने कौन केंद्र ऑफ द डेमोक्रेसी। It enshrines the rights of people in the country and affirms the democratic value of human dignity, equality and freedom. The South African Constitution, South Africa जो संविधान in chapter 11 चैप्टर 11 रे भाग 11 रे ओके चैप्टर 11 रे from section 7 to 39 contains South African Bill of Rights। तो साउथ अफ्रीकान जो बिल राइट रही चैप्टर रे मन रखिथांतो चैप्टर 11 साउथ अफ्रीकान कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 11 सेक्शन 7 to 39 contains South African Bill of Rights। परीक्षा रे 1 मार्क्स मध्ये आसी पारे। नेक्स्ट देखिबा कोन राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एडॉप्शन ऑफ बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो बिल ऑफ राइट्स को एडॉप्ट करागला इतिहास देखिबा। तो साउथ अफ्रीका फर्स्ट बिल ऑफ राइट्स वाज कंटेन इन चैप्टर 3। तो फर्स्ट चैप्टर 3 वाला पर कोन चैप्टर 11 को ऑफ द ट्रांजिशनल कॉन्स्टिट्यूशन 1993। दिस इंटरियम बिल ऑफ राइट्स व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन 27 अप्रैल 1994। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वर लिमिटेड हियर। एथिरे कोन सिविल और पॉलिटिकल किछ लिमिट थिला सो किछि तार लिमिट थिला। The current Bill of Rights जो वर्तमान Bill of Rights was replaced on 4th February 1977। तो फास्ट जो थिला 1994 जो बिल ऑफ राइट केम इनटू फोर्स हला किंतु जो ताहा पर कोन हला ना किसी सेथिरे किसी सिविल और पॉलिटिकल राइट को लिमिट थिला किंतु वर्तमान जो करंट बिल ऑफ राइट्स अछि ताहा को रिप्लेस करला केबे ना 4th February 1997 रे। इट इज द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। देयर इज न्यू पॉजिटिव इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल। तो कौन फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीकार जोटी कि किसी नुआ नुआ पॉजिटिव चेंज है जपरी आर्थिक क्षेत्र में हो सामाजिक क्षेत्र आउ कल्चरल राइट्स क्षेत्र में किसी न्यू पॉजिटिव आसला। नेक्स्ट टाइम देखिए राइट अबाउट द सेक्शन 12 ऑफ साउथ अफ्रीकान कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्शन 12 ऑफ साउथ अफ्रीकान कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स नॉट टू बी पुट इन प्रिजन विदाउट गुड प्रिजन। Okay, not to be detained without true trial, not to be free from all kinds of violence माने वन पब्लिक प्राइवेट जो प्रत्येक क्षेत्र में not to be treated on punished in a cruel on human, to make decision about to reproduction। Right about the section 24 of South। section 24 कौन ना the South African Constitution deals with the environment। section 24 कौन से परिवेश को डील करछंती। everyone has the right to an environmental that is not harmful to their health on well-being। The environment must be protected for the person and future generation। The government also must pass law to prevent pollution, promote conservation and make sure that natural resources are developed to promote social and economic development। Next time देखिए what are the children rights in South Africa। The to name and nationality from the date they born, to proper care by their parents, to enough food, shelter, basic health care and social service। सब इजी वर्ड्स तो हम कौन ब्रीफली ओवरऑल अपन को डिस्कस करबा। नॉट टू यूज इन वर्ड्स माने जुदर यूज करा जीवनी। नॉट टू फोर्स टू वर्क और गिवन वर्क व्हिच इज नॉट सुटेबल फॉर द चाइल्ड। नेक्स्ट टाइम देखिए राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सेक्शन 33 guarantee that administrative action will be reasonable, lawful and procedurally fair। It also makes sure that someone have the right to request reason for the action that affect someone। The government must pass law to provide for a review of the action of the government official। तो गवर्नमेंट मध्ये गोटे भल स्टेप नउछंती जोंदि कि समान कोन करबे नेचर ऑफिशियल रहछंती ताहार मध्ये रिव्यू कर परिबे। इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल गवर्नमेंट बॉडीज टू प्रमोट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। Which rights of South African people can not be suspended during emergency।
तो जो जरूरीकालीन समय कौन कौन अधिकार गुड़ी सस्पेंड करा जाउनी साउथ आफ्रिका लोक मानकर तो से गुड़ी कहला द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी राइट टू लाइफ राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम फ्रॉम टर्चर ओके तो कमेंट जनातु आमर मध्य जो इंडियन राइट्स रे इमरजेंसी टाइम रे को राइट गुड़ी कौन माने सस्पेंड करा होने आपण मध्य कमेंट कर पारे नेक्स्ट टाइम देखिए डिस्कस अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 when the courts are deciding a case on bill of the rights they must promote the values of an open and democratic society based on freedom and equality they must look at international law and at courts decide similar cases decision write the name of institution that protects people rights in South Africa तो कौन institution रही जहाँकि साउथ अफ्रिकार जो लोक मानकर अधिकार को सुरक्षा दूसरी तो चैप्टर 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका प्रोवाइड 7 इंस्टीट्यूशन 7 इंस्टीट्यूशन रही टू प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स से गुड़ी कहला द पब्लिक प्रोटेक्टर साउथ अफ्रिकान ह्यूमन राइट्स बा SAHRC कमिशन ऑफ जनरल इक्वालिटी ऑफिस ऑफ द स्टेट ऑडिटर जनरल इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिशन इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीका What are the functions of a public protector? The public protection investigates complaint about the following matters जेपरिक poor administration of the government officials who abuse their powers, imperial conduct of official, corruption of public funds by public official, any act of commission by public official that result in a prison to a citizen. तो ये सब क्षेत्र में public protector जो function काम करे पब्लिक प्रोटेक्टर मैंने कौन बुझी जाते पब्लिक सुरक्षा सुरक्षाकारी जो प्रोटेक्टर निहत सब कौन देखिए अकाउंटेबल रही चेष्टा करें लोक मान आगे व्हाट इज ऑडिटर जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका द ऑडिटर जनरल इज वाच डॉग ऑफ ऑल मनी दैट इज गिवन द गवर्नमेंट ऑल स्पेंड बाय देम द ऑडिटर जनरल चेक्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल नेशनल प्रोविजनल एंड लोकल गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट मनी इज बीइंग अकाउंटेड फॉर माने कौन केते टंका खर्च है ऑडिटर जनरल कहते से नेशनल क्षेत्र हो पारो कि प्रादेशिक क्षेत्र हो कि लोकल क्षेत्र हो पारो What is the Cultural Commission of South Africa? Cultural Commission कौन साउथ अफ्रीका the Cultural Commission of South Africa is also known as Commission for the Promotion and Protection of the Rights to Culture, Religion and Linguistic Communities. Cultural माने कौन ये सब हमरो राइट्स कल्चर को नहीं हेबो रिलीजियस धार्मिक लिंग्विस्टिक भाषा ओके कम्युनिटीज दिस कमिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ कल्चरल रिलीजियस and linguistic communities act 2002 its purpose is to promote and develop peace tolerance and national unity among communities. What are the fundamental rights of the people of India? तो इंडिया भारतीय नागरिक लोक नागरिक मानकर फंडामेंटल मौलिक अधिकार कौन कौन रही द कंडीशन ऑफ इंडिया गारंटीज नंबर ऑफ राइट्स टू सिटीजन दीज आर नोज ऑफ फंडामेंटल तो आम जानते आमको जो अधिकार मिलती फंडामेंटल राइट्स रही है संविधान में स्थान दी जाए मौलिक अधिकार रूपे दीज राइट्स आर इनोटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाग 3 दीज राइट्स बेसिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी मानविक पर्सनालिटी को विकास करने डेभलप करने से राइट्स को दी जाए दीज राइट्स आर इनफोर्सिबल बाय कोर्ट्स नाउ देर आर 6 फंडामेंटल तो आम जानते आगु 7 था बर्तमान 6 रही ओके तो 6 कौन रही आम आपको डिस्कस करवा व्हाट आर द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो इंडियन सिटीजन तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्सिबल राइट्स फंडामेंटल राइट्स आर एमेंडेबल राइट्स आर क्वालिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड ओके What are the significance of fundamental rights? So fundamental rights significance कौन that they form bedrock of democratic system of India, facilitate the establishment of rule of law, protect interest of minorities and weaker section of society मैंने कौन खाली large मैंने minority मानक जो कम लोक minority लोक मानक मध्य weaker section society मानक मध्य ताको मध्य दे जाइए the strengthen the secular fabric of India it checks the absoluteness of the authority of government. What are the provisions of the right to equality in Indian Constitution? तो आर्टिकल 14 to 18 रे Indian Constitution deal with the right to equality. हम जानते हैं it purpose to establish the rule of law where all citizens be treated equal before the law. माने आईन है समान equal protection of law. There should be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex on place of birth. Article 14. Okay. It also generates of opportunity to all citizens in matters of public employment article 16 तो ये सब को आम जो आर्टिकल डिस्कसन करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आम ब्रीफली डिस्कसन करबा माने एलाबोरेट कर डिस्कसन करबा तो यही पर वीडियो पे हम चैनल जॉइन हेतु वीडियो शेयर मध्य करंतु
नेक्स्ट टाइम देखिए राइट अबाउट द रिट प्रोविजन ऑफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमको कौन रिट मिलची तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ आम जानते आम जो अधिकार क्षुण्ण है ताहले आम कौन हाईकोर्ट सुप्रीम दी जगह आम कौन ये सब आम अधिकार क्षुण्ण अपील कर तो द फंडामेंटल राइट्स कन्फाइंड इन द पार्ट 3 of the constitution under article 32 the high courts are also empowered article 32 कौन high court जाइए the 5 types of rights are कौन habeas corpus mandamus statutory provision and quo warranto right about the criticism of fundamental right कौन criticism रही तो it has no clarity it refers to expensive remedy there is no permanency it may be suspend during emergency तो मान अधिकार किछटा आमर जो इमरजेंसी टाइम रे सस्पेंड मध्य होई छै देयर इज नो कांस्टेंट फिलोसफी ऑन लैक ऑफ एनी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स तो इतले किछि 3 मास क्वेश्चन आंसर नोट्स टी जो माने कि नोट चाहते डिस्क्रिप्शन रे म टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे देछि आपण माने नोट्स को जॉइन हे परिबे माने जॉइन हे कि नोट्स डाउनलोड कर परिबे नेक्स्ट रे आमे यूनिट 4 जहा कि इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ रो नोट्स टी डिस्कशन करिबा थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।